फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome back to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and just when England were looking pretty set for a big total, they have lost another wicket. They've lost 2 wickets in the first session of day one. They're 100 for 2. Well, to talk more about this, Kuldeep's bowling, क्योंकि कुलदीप ने दोनों विकेट लिए हैं. I have with me Jamie Alter, Taus Sri and Kanav Bali joining me in this session. Welcome to Cricket Next, everyone, and welcome back. Taus, बहुत जल्दी मिलना हो गया. Jamie, I'll start with you. They were looking pretty good. England शेकी स्टार्ट, लेकिन थोड़ा सेटल डाउन करा, एक पार्टनरशिप लगा, एक ब्रिलियंट कैच फ्रॉम शुभमन गिल. उसके बाद जस्ट एट द स्ट्रोक ऑफ द लंच कुलदीप गेट्स अनदर विद अ ब्रिलियंट डिलीवरी. ध्रुव जुरेल ने एक बहुत अच्छा पीछे से एक क्यू दिया था कि आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े, एंड ही वाज स्टम्प्ड. व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सेशन ऑन द होल? Very fascinating session. You know, from it took me 2 balls into the match to realize कि यहाँ पे bounce तो है ही नहीं, यहाँ bounce तो है नहीं. You know, when Jasprit Bumrah, despite bowling, Jasprit Bumrah is looking off, I said यहाँ तो bounce नहीं है. I was waiting, भाई Kuldeep कब आएगा. Kuldeep did not bowl very well in that over. That was just Ben Duckett being Ben Duckett. I'm not going to count that wicket. वो तो मुफ्त था. 2 चौके आ चुके हैं. कुलदीप, तौस भाई ने कहा था ये कल के शो पे और one time before also, if he's हल्का सा यहाँ वहां ये उसको मारेंगे. लग रहा था कि because it's not the first time, 3 बार इस सीरीज में कुलदीप ने आके पहले ओवर में 2 चौके खाए थे. जॉब वाज डन. दैट विकेट इज जस्ट बेन डकेट बीइंग बेन डकेट. लेकिन जो लंच के स्ट्रोक पे जो आया, दैट वाज समथिंग एल्स, बिकॉज लाइक यू सेड, जुरेल ने एंटिसिपेट किया था वो विकेट. तो हैट्स ऑफ टू जुरेल फॉर हैविंग दैट सेंस. दोनों यूपी वाले हैं, उनकी एक ट्यूनिंग होगी. दैट वाज द विकेट. अगेन इट्स आई स्टिल थिंक इट्स इंग्लैंड सेशन, क्योंकि 4 रन प्रति ओवर ऑलमोस्ट तक पहुंच गए हैं. दिस इज अ बैटिंग ट्रैक. देयर इज अ लॉट ऑफ रन्स. यहाँ से they're going to have to cock it up to not score 400 runs. This is a flat track. हल्का सा variable bounce, but nothing alarming. Kuldeep Yadav, once again, it's Dharamshala. It's day 1. He's got 2. He's going to emulate his debut match. And आज तो बंदा 4 लेगा, but फर्क ये है कि runs मेरे ख्याल से, unless India get it together, because India, पता नहीं यार, मैं flat तो नहीं बोलूंगा. But the way that Bumrah was creating chances, मुझे लगा यार कम से कम 1-2 और विकेट होने चाहिए थे. But it's not his day. कोई बात नहीं. I guess that was Zach Crowley, just that the one that just nipped him, not even nipped away, वो थोड़ा मिस किया मिडिल स्टंप के ऊपर से. That was a brilliant ball. But Taus bhai, the way England are batting, you know, personally I feel they are a bit cut loose. और ये चांस है इंडिया के लिए टू पिक अप विकेट्स क्विकली एंड यू नो जस्ट रैप द इनिंग्स इन ऑन डे 1 इटसेल्फ. क्योंकि अगर वो लोग डे 2 तक चले गए तो यहाँ 450-500 भी लग सकता है. जिस तरीके से लोग खेल रहे हैं, 100 इन द फर्स्ट सेशन इज अ बिट रिस्की. Yeah, 100, good start for England. Yeah, unlucky that they got Oli Pop out. For them, unlucky, good for India. But it's a good, beautiful wicket to bat on. यार मजा आएगा. और इसमें आप देख रहे हो बैटिंग लाइनअप डीप है इनका. I mean, it's not a rookie batting lineup which we will expect to get out early. आज के दिन ही खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि बैटिंग ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक यार. वो चांसेस भी ले रहे थे शुरुआत में. आप देखिए बुमराह डाल रहे थे, अच्छी स्विंग हो रही थी, बॉल थोड़ा बाउंस मिल रहा था, पेस जनरेट हो रहा था, बट वो पूरा लक पे खेल रहे थे. जैक क्रॉली एजेस निकाल रहे थे, मगर ही वाज स्टिल इन कंट्रोल डिस्पाइट दोस एजेस. बट इतनी जल्दी ऑल आउट होना, हम एक्सपेक्ट करना कि यार या तो फिर ये बहुत बच्चे, इनको खेलने नहीं आता है. यू हैव अ जो रूट, यू हैव अ बेस्ट होने को तो कुछ खास नहीं किया, तो दिस वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. और बैटिंग इंग्लैंड कंडीशंस लग रहे हैं वहां पर, ठंडी है, बैट पे अच्छा आ रहा है बॉल. स्टोक्स अगेन ही डिड नॉट मेक एनी ह्यूज डिफरेंस, तो ही वुड बी कीन ऑन. तो यू स्टिल हैव अ गुड बैटिंग लाइनअप फॉर इंग्लैंड. बट एक चीज आपने नोटिस की है जेमी भाई, कानव भाई और सौम्य भाई, की यार इंडिया ये सीरीज में परफॉर्मेंस छोड़ दी, जो सेटअप किया उन्होंने, डेब्यूज, फील्ड्स, बहुत सारी चीजों में सरप्राइज किए हैं. आई मीन देवदत्त पडिक्कल डेब्यू कर दिया, 5 डेब्यूज हो गए. तो लॉट ऑफ थिंग्स वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग हैज हैपेंड इन दिस सीरीज. क्या था आपके पास
ऑप्शन था क्या? कराना तो थे ही डेब्यूज. But they have surprised us a lot in a lot of areas, you know, from playing three spinners to going with different year. So quite a decent year. I'll come to the bowling bit. I'll come to the bowling bit in the playing 11, but I'll go to Kanav. Kanav, as I said, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि इंग्लैंड because they want to play an aggressive manner, कहीं ना कहीं वो complacency या वो cut loose हो रहे, and this is a chance for the Indian bowlers to pick wickets. So I mean, that has always been the case with this England team. They'll go for runs, and that is actually the downside of their batting, that they'll also give away wickets. जिस तरीके से ओली पोप आउट हुए, ही वॉज लुकिंग अ बिट जिटरी स्टार्ट में ही, बिकॉज वो मे बी हाथ से बॉल पड़ नहीं पा रहे थे. वो पहले भी आगे आके शॉट्स मार रहे थे, बिकॉज ही समवन हु वांट्स रन्स. उनको स्ट्राइक रोटेट करनी है. वो ऐसे नहीं है चौके छक्के जरूर मारे, पर उनको स्ट्राइक रोटेट करनी है. वांट्स टू टेक दो सिंगल्स एंड डबल्स. तो जब आगे आ भी रहे थे, तब ऑल्सो आई वाज थिंकिंग कि व्हाट इफ वन टर्न्स द अदर वे. वो स्पिन के साथ आगे आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई हाथ से रीड ना हुई, और वो दूसरी तरफ जो कुलदीप ने किया, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट. और अब कह आप ये सकते हैं कि जस्ट लंच से पहले का आखिरी ओवर था, आपको क्यों आगे बढ़ना था, बट दैट इज हाउ द इंग्लैंड टीम वर्क्स. उनको अपने जो शॉट्स हैं उसके लिए बैक किया जाता है कि अगर आप अपने शॉट्स खेलना चाहते हैं तो खेलिए. क्रॉली ने अपने शॉट खेले, अश्विन को सीधा बढ़ के आगे बढ़ के छक्का मारना इट्स नॉट इजी. कोई भी पिच हो, कुछ भी हो, एक कॉन्फिडेंस चाहिए रविचंद्रन अश्विन को आगे बढ़ के छक्का मारने के लिए ओवर हिम. तो वो है उनका खेलने का तरीका. क्रॉली अब तक सक्सेसफुल रहे हैं इस सीरीज में, काफी डेंजरस लगे हैं, लंबे हैं, उनकी रीच ज्यादा है, तो उनके लिए रिलेटिवली इजी होता है ये शॉट्स मारना, क्योंकि वो बॉल को इजीली रीच कर जाते हैं. ओली पोप जैसे हाइट थोड़ी छोटी, तो वो भी एक अलग, दिस इज समथिंग दैट डिफर्स इन द बैटर्स. बट देन अगेन द अप्रोच सौम्य हैज ऑलवेज बीन द सेम, एंड दैट इज द रीजन वी कॉल इट द डबल एज स्वॉर्ड. 100 रन तो है, लेकिन 2 विकेटें भी है, और वो दोनों विकेटें आप कह सकते हैं बैटर्स की गलती है. बेन डकेट अगेन, जिस तरीके का शॉट वो खेलने गए, जो आप स्ट्रेट खेल सकते थे, उन्होंने शॉट गलत खेला, मारने गए, हम कहते हैं ना एग्रेसिव, छक्का मारने गए, आउट हो गए. ओली पोप तो इट वाज क्वाइट एविडेंट जिस तरीके से वो आगे बढ़े. बेशक शॉट मारने ना गए हो, पर आपको आखिरी ओवर है लंच से पहले, और बैटर अपनी विकेट बजाता है कि तरह वो ओवर खत्म करना चाहता है. बट द फैक्ट दैट दे वर्क इन दैट वे, दिस इज देयर अप्रोच, इट विल गिव यू विकेट्स आल्सो. Okay, I got that. But Jamie, जिस तरीके का बैटर आप फॉलो करेगा, जो रूट, he completely changed his way of playing in these conditions. उन्होंने कहा बेसबॉल को टाटा बाय बाय जब 3 मैच नहीं चले, then he picked up his own game. वो इस जगह पे, इस सिचुएशन में और इस वेन्यू पे बहुत संभल के खेलने वाले हैं. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ बिट रिस्की, क्योंकि फॉर द इंडियन बॉलर्स, क्योंकि जो रूट संभल के खेलेंगे, उसके बाद बेयरस्टो आएंगे, ही माइट गो ऑन टू प्ले हिज स्ट्रोक्स. देन बेन स्टोक्स, वी ऑल नो बेन स्टोक्स इज द ओनली वन हु डजंट प्ले बेसबॉल इन दिस टीम. सो ये कहीं ना कहीं 2 विकेट जरूर निकले हैं, गलत शॉट्स पे निकले हैं, ये फाउंडेशन जरूर ले हो गया है इंग्लैंड के लिए टू फॉर अ बिग टोटल. Considering the batters who are going to follow. No, absolutely, which is why I think, again, like Kanav just said, double-edged sword, right? चलो 2 विकेट करके इंडिया ने कहीं ना कहीं वापस खींचा है. इंग्लैंड might go into the break saying, you know what, given the amount of swing we saw on offer at the start, पहले आधे घंटे में 40 मिनट में, we're lucky not to be more than 2 wickets down, right? तो हर ये बेसबॉल का क्या है, I always see हर ब्रेक के बाद, हर इंटरवल के बाद ये बेसबॉल वाले करते क्या है, राइट? 100 for 2, it should have been 100 for 1. एक विकेट के होने से, हालांकि it's been, I know he got that 193, but after Johnny Bairstow, Pope has been a disaster in this series. That 193 हमने बहुत shows किए थे, but उस बात को 5 हफ्ते हो गए. We can firmly put that 193. Baseball has been pricked. Ollie Pope has got a pair in the last match, so I'm not going to read too much into Ollie Pope. Ollie Pope is a walking wicket. How does Brendan McCullum and Ben Stokes view this session? यदि वो मानते हैं कि भाई 2-3 विकेट और होने चाहिए, हमको तो लक मिल गया है, और ये जोकर्स क्या करते हैं लक के साथ, we've seen they can do anything. Will Joe Root come out and play the Joe Root we think? I'm not convinced. This Joe Root might be the one that says, भाई मेरा फॉर्म खराब था, मैंने 2-3 गंदे शॉट मारे, तुम सब मेरे ऊपर चढ़ गए, तुमको चुप रखने के लिए मैंने एक ट्रेडिशनल नॉक खेला, हो सके आज मैं वो रिवर्स स्वीप वाला नॉक खेलूं. आई डोंट नो, दिस मैच इज सो फैसिनेटिंगली पोइज्ड राइट नाउ ना. 100 for 1, 102 मिले, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है. पॉइंट इज प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है.
Tosby termed it a beautiful wicket. It is a very beautiful wicket. Zach Crawley, Kanav mentioned, अब तक लगे हैं उस भाई का 100 नहीं आया इस सीरीज में, but he's been their best batsman. What if he takes this 53 not out? I just think whatever India have to rest back from this match right now, ये इस सेशन में होने वाला है. I don't think even baseball वाले फाइनल सेशन तक देख रहे. इनको पता है आज हम 330 रन स्टंप्स तक मार सकते हैं. ये ऐसी विकेट है, राइट? जडेजा अब तक नहीं आए. The only threat was the threat of bounce, which Kuldeep has, to his credit, exposed. It's just so amazingly placed right now. I cannot say. Normally, I'd say, हाँ, अभी ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे. I'm actually at a loss of words to say कि वो कौन से approach लेके आएंगे. Joe Root will come out. He'll be facing the first ball. But my gut feeling is आज वो कुछ baseball type innings खेलेगा. Okay, Tawzai, what do you think? Joe Root will continue his traditional way of playing the game, or will he turn back to baseball, playing his reverse sweeps and sweeps? Last game में he got his century because of the traditional way yeah. उसके पहले he tried doing something out of the box, something, aping his young teammates, or maybe going with the trend that the baseball has set in. I don't think so. He should go with that way. You never know what could happen with Joe Root, but I would prefer not to. See, this wicket is so good to bat on कि आप वहां पर खड़े भी रहोगे ना, आप तो runs अपने आप आएंगे. You don't need to do something extraordinary or try too hard. क्योंकि beautiful wicket, of course, I mean cliched हो गया अभी तक तो. बट आपको खाली टाइम स्पेंड करना, और जिस तरह से विकेट आ रही है, जिस तरह से खाली गलती नहीं करना. आई मीन द लास्ट मिस्टेक दैट पोप डिड, एंड आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू ध्रुव जुरेल फॉर दैट पर्टिकुलर विकेट अलोंग विद कुलदीप. इसका काम ही है, ध्रुव जुरेल ने अपना ब्रेन यूज किया वहां पर और दिखाया कि भाई ही इज ऑन टॉप ऑफ द गेम राइट नाउ. तो जो रूट शुडंट डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ही शुड बी देयर स्टैंडिंग लाइक बाकी सबके लिए. बाकी जो जिनको जो करना है करे, वो अपना रोल कंटिन्यू करे. हाँ, बट ऑड बॉल आएगी, एक अपॉर्चुनिटी आएगा रिवर्स स्वीप खेलने का, या दोज एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स शॉट्स, ही शुडंट हेजिटेट. बिकॉज चांसेस ये कि आप जो पिछले टाइम सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो एग्जीक्यूट करने में, दिस टाइम यू विल बी मोर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफ द विकेट. और मजा आएगा देखने को जो रूट जिस तरह से अप्लाई करेंगे. आई वुडंट वांट हिम टू डू दैट यार. आई वुडंट. मैं एक्सपेक्ट करूंगा यार जल्दी बैस बॉल ही खेले, आउट हो जाए और इनको चांस मिल जाए वापस बल्लेबाजी करने में. आई वुडंट वांट Joe Root to stay longer, but if he stays longer, if he plays his natural game which got him a century, then I'm afraid that he's there for a big one. I wouldn't want that. Okay, I'll quickly take a comment from Kanav, and then we'll move to the questions, the queries that we are getting. Kanav, do you think यहाँ पे जिस तरीके का थोड़ा बहुत जो भी conditions मिल रहा है, we could have gone for a third pacer / seamer? See, it's an interesting road. I was watching the live yesterday, which you guys did, and everybody had a good opinion about whether to go with an extra seamer or an extra spinner. I myself again would have backed extra spinner as well, because there's Ashwin and Jadeja. Practically, you see, Jadeja won't be dropped. Ashwin ka 100 test. It's between Kuldeep Yadav or a third seamer. In this case, and I believe, and we have seen in the first session what Kuldeep Yadav did. Yes, the wickets belong to the batters, the way they got out, but then again, the spin and the grip that Kuldeep is getting on this pitch, that is something that you needed badly. Yes, overcast conditions, you are tempted to play an extra seamer. Is conditions में, in clouds में, is weather में, Dharamshala का weather, you guys know, you live closer to that place, कितनी जल्दी change होता है, कैसा होता है. तो I would have been tempted, but then again, this is a very right decision to go with Kuldeep Yadav over the third seamer. आकाशदीप बहुत अच्छी bowling डालते हैं, बट वो जो ग्रिप और जो टर्न कुलदीप यादव का, और वो स्पेशली एक मेंटल गेम है इंग्लैंड के साथ, क्योंकि वो कुलदीप यादव के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं. टू हैव दैट बॉलर इन दीज कंडीशंस ऑन दिस पिच, तो दिस कैन रियली ऐड टू द फैक्टर, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दे हैव गॉन विद कुलदीप यादव हियर. Okay, let's move on to the comments, please. Okay, Vyan Singh. Crawley got bowled twice to Akashdeep to an incoming delivery. Kuldeep got him bowled and LBW to an incoming delivery. Even in this test, he survived the LBW to an in-swinging delivery. It's more of a anecdote, Vyan, but yeah. Jamie, if you would like to take that. Probably he's talking about his weakness against the ones that come in.
Absolutely. I've been watching the whole series as well, so I know. I'm aware. Okay, next one, please. Sunny, were our seamers too short with the length? Taus bhai. Yeah, I mean शुरुआत से ही यार बुमराह बोल्ड some good deliveries यार वो Ben Duckett को जो उसने Yeah, निकाले that surprised exactly. him. I wish it was a wicket, but then that would be remembered still for that Jaffa. But yeah, short तो थे यार, and that is the problem with these two guys. The problem, see, ये Jasprit Bumrah is more effective, with the old ball. He's more effective, more in control. But when it comes to new ball, वो operate करने के लिए, I think it's Mohammad Shami who's better than these two guys. Yeah. So they could have kept it in, but then आप ये भी देखो ना यार, बुमराह, you will either see him get a batter out with that Jaffa, a short ball or a length ball, और सिराज का कंट्रोल नहीं रहा है. सिराज कंट्रोल आपको या तो मतलब वो भी ओल्ड बॉल से ही ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, नए बॉल से कब, जब वो लेंथ थोड़ा सा शॉर्ट रहेगी, बाउंस नहीं रहेगा तब. But आप you won't see a Bhuvneshwar Kumar kind of a guy. Bhuvneshwar is somebody who could get you those full deliveries and nicks and edges. LBW with the new ball. वो एक बॉलर है जो बंदा नए बॉल से ज्यादा कंट्रोल कर सकता था. Then Mohammad Shami. Mohammad Shami is also similar kind of a bowler like these two guys, but वो थोड़ा full डालते, थोड़ा नए बॉल से ज्यादा बेटर डालते इन दोनों से. So yeah, a bit short. They could have been And एक चाहिए, एक मिस हो what do रहा you है think? बंदा. What do you आकाशदीप think भी about सेम नेचर का है by the way. आकाशदीप? मैं उसी पे आ रहा था कि what do you think of आकाशदीप? क्या Team वो शायद आकाशदीप भी वो similar बहुत type है. We need a bowler, somebody who can like at least start with the getting those breakthroughs with the new ball. आगे डाल के एजेस निकाल के आपको मिल रहे थे, बट वो लेंथ जो गैप था बैट और बॉल के बीच में वो बड़ा था, क्योंकि वो वो शॉर्ट बड़ा पिच है. कर रहे थे, वो थोड़ा शॉर्ट हो रहे थे, लेंथ पे जा रहे थे. Yeah. आगे Probably जब this आप would be नए the बॉलर डालते हो तो आपको आगे डालना yeah. है फ्लिप्स के में जाने के लिए. ब्रेक में यही सारी बातें करनी पड़ेंगी इंडियन टीम को. Okay, next one, please. I think Dravid went to check the pitch once players came in. Jamie, I will come to you for this. It must be part of the KRA to go and spend a certain time staring at the pitch. But why would you do that? अभी तो आप कुछ कर भी नहीं सकते ना. At a loss of words. This is one phenomenon regarding this Indian team which I am at a loss to describe. कि एक इंसान इतना समय कैसे देखता है पिच को. He just wanted to see the Dhauladar lanes from that angle. He just went with an excuse of the pitch, but he stood there. तो कांच थोड़ी लगा हुआ है. ऊपर की धौलाधार दिख जाएगी. लेकिन उनको सेंटर ऑफ द पिच से देखना. Next one, please. Duckett Crawley have given good starts in almost every innings, but they have collapsed from there on. Sports fan, Kanaf. I think it's the same thing that we discussed. It's how they operate. This is how they bat. They give good starts, but you never know वो कब जो अच्छे shots जा रहे हैं कब हवा में उड़ जाए, because they are playing risky shots यार. Crawley more or less he knows what he's playing. वो थोड़ा risk कम लेते हैं. Duckett तो will out of the blue play one shot जो उनको भी नहीं पता, वो आंख बंद करके जय माता दी जहाँ गई. So that is the case with Ben Duckett. Zach Crawley has more control over his shots. So that is the reason, as Jamie said, that even though he doesn't have 100, he is probably their best batter in this series because of the kind of control that he has showed throughout the series and especially today in this match. And that has been the case. वो runs मारेंगे, तेज runs मारेंगे, अच्छी start देंगे, but then again वो फटाफट collapse शुरू हो जाता है और नीचे आने वाले hopefully जो रूट नहीं करेंगे. I don't see Joe Root playing the baseball way now in this match. He'll play his authentic orthodox shots and he'll easily get 100 अगर वो कुछ वो कलाबाजी ना करे रिवर्स स्वीप, especially to the likes of Bumrah and Kuldeep. Yeah. Ben Duckett जैसे आउट हुआ है ना, मुझे कल वाली स्टेप आउट करके मारने में ये जय माता दी बोल के बिना कुछ सोचे समझे बोले जय माता दी लेट्स रॉक. लगा तो लगा, नहीं तो आउट. नहीं तो आउट. वो जैसे वो आउट हुआ है ना, मुझे वो कल वाली बात याद आ गई रोहित की कि भाई हमारी टीम में एक लड़का है ऋषभ पंत, उसको देखो वैसे खेलते हैं एग्रेसिव क्रिकेट. नेक्स्ट वन प्लीज. स्वैप. कुलदीप की जगह 3 पेसर खेलते तो इंग्लैंड 0 विकेट पे होता. बोल्ड स्टेटमेंट. जेमी, व्हाट डू यू थिंक?
वो है ना, अगर क्या है वो कहावत भाई, मैं बहुत वीक हूँ इनमें, अगर मौसी की मुच्छी होती तो क्या है वो, ऐसा है। वो मौसा होते हैं, अगर मेरी मौसी की मूंछें होती तो वो मौसा होता। वही बात है, हाँ वो नहीं होते बिकॉज ही इज टेकन द 2 विकेट्स, तो बट दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी बॉलर हु yeah, कम्स इन, बट exactly. या आई गेट, मैं जज्बात समझ सकता हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है, करेक्ट। Yeah. Okay, next one please. और यार थोड़ा सा क्रेडिट पहली विकेट का गिल को भी दे दो भाई, वो लड़के ने क्या कैच लिया, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। स्टनर सुपर्ब स्टनर, कैच, सुपर सुपर्ब फन, कैच। Root सुपर। versus Bumrah will be an interesting contest now. Jamie, I'll start with you. I would like to नहीं know. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, नहीं एब्सोल्युटली, दिस व्हाट आई एम सेइंग, दिस गाय इज फॉलन टू बुमराह मोर देन एनीबॉडी एल्स। मैं वही देख रहा हूँ, आई थिंक ही इज गोइंग टू, ही इज नॉट गोइंग टू रिवर्स फीड जसप्रीत बुमराह एंड गिव अ कैच टू गिल, यशस्वी जायसवाल, वो नहीं करेगा। वो अपना ट्रेडिशनल, दिस इज जस्ट माय गेस्टिमेट हियर, वो अपना ट्रेडिशनल अप्रोच बुमराह को देगा, बाकी जो स्पिनर आएंगे ही इज गोइंग टू ट्राई एंड बी समवट अग्रेसिव, या Okay. आई थिंक Tausay, सो, what do you think? जो कि अच्छा है, हम लोग के लिए अच्छा है। हमारे लिए अच्छा है, yeah. Tausay, what do you think? It's been quite an interesting contest na so far. So मतलब see again जेमी भाई की तरह ही exactly what he'll be more cautious, क्योंकि बॉल अंदर आएगी मोस्टली, जो जसप्रीत बुमराह इनको टारगेट ही करेंगे, रिवर्स स्विंग करके यॉर्कर डालने की कोशिश करेंगे, अंदर बॉल लाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ ही गॉट आउट टू जसप्रीत बुमराह। बट या अगेन जब स्पिनर्स आएंगे तो ही वोंट बी कॉशियस, बॉल अच्छी मिलेगी तो दे देंगे बाहर, but he would look to go for that longer innings. Jasprit Bumrah, of course, is going to be a great contest. यार मजा आएगा देखने को. But this time, I think it would be Joe Root who will come triumph. I believe Okay. because Okay. again wicket यार, wicket द्रविड़ ने देख लिया wicket क्या है, तो फिर Okay. But Kanav, do you think यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को, मतलब थोड़ा सा वो पुश करना पड़ेगा लाइन एंड लेंथ को, और वो फुलर एरियाज में पिच करना पड़ेगा टू गेट रेड ऑफ जो रूट, क्योंकि जिस तरीके से बुमराह वर्सेस रूट की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से बुमराह ने बॉल डाला है वे आउटसाइड ऑफ स्टंप, थोड़ा सा मूवमेंट मिल रहा है, बट विड्थ है एंड इजीली कैरी, कीपर के पास कैरी नहीं हो रहा, तो एज आने का चांस थोड़ा सा कम है उस लेंथ पे, उस एरिया में। डू यू थिंक वो थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा उस लेंथ को बुमराह को टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट? स्टार्टिंग में करना पड़ेगा बिकॉज दे आर न्यू, वो फ्रेश है क्रीज पे, तो यू विल हैव टू बोल सम, जो बुमराह करते हैं शुरू में, आजकल वो यॉर्कर डालने शुरू हो गए एक आउट ऑफ द ब्लू टू सरप्राइज द बैटर, स्पेशली आफ्टर दैट ओली पोप डिसमिसल। तो स्टार्टिंग में यू कैन कीप फुल, बट once Joe Root gets set, उनको फुल डालना is a crime because he sees the ball like a football, और वो cover drives, straight drives, because he is a very classic player in that sense. वो middle of the bat से आपको cover drive, square drive, straight drive मार देंगे। शुरू में आप ट्राई करिए एज का, क्योंकि वो खेलने जाएंगे, वो भी इंस्टिंक्टिवली उनको भी रन्स चाहिए, तो वो बॉल को चेस करेंगे, तो यू माइट फाइंड एन एज समवेयर और एन इन स्विंगिंग LBW, you never know. But once he gets set, I don't think that will be a good option. You will have to bring in your spinners, and again I still believe that he won't play his shots that he ram shots and everything. एक अद्धा कभी खेल ले, but I believe this is a perfect opportunity, perfect pitch conditions for him to score big here. आराम से मार सकते हैं, पिच में कोई demons नहीं है, पहले डे की पिच है, आपने बैटिंग ली है, आपके लिए काफी अच्छे कंडीशंस है, अगर आप अपनी जो वो शॉट्स है रंग बिरंगे उनको कंट्रोल में रखें, तो I believe we can see another century from Joe Root. Okay, but I don't know why I just have this gut feeling कि एक hunch है कि जडेजा is going to trouble him. I don't know why, I just feel that वो एक ही जगह पटक के उन्हें परेशान करने वाले हैं. Well, quickly before we wrap the session, Jamie, your prediction for the second session? Fascinating यार, जो भी होगा. I don't think वो जो reverse swing वाली बात तौस भाई ने, I don't think Bumrah is going to have that spell now. That's going to come a little later. आएगा तो जरूर आएगा और बहुत मजा आने वाला है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है. जडेजा, Kuldeep, Ashwin, these guys have to bowl the majority of the session. बल्कि मैं तो अगले 2 घंटे के लिए पेसर्स के पास जाऊंगा ही नहीं. I will see, Jadeja is not bowled, योगदान रहेगा क्योंकि वो जडेजा है. 2 wickets and another 100 odd runs. It's going to be a grind, but it's going to be fun to watch from a neutral perspective. So basically 200 for 4 at the end of second session. That is what your predictions. Okay, that was right. 220 odd for 4. Yeah. That was quickly your prediction. वही आसपास 200, 250.
2-3 Okay. विकेट और गिरेगी. But I think it's more easier to bat on. Yeah, it's easy to bat on even if spinners operate. Ball को इतना turn नहीं मिल रहा है और first day, so it would be unfair for even to expect too much turn. Also curator को भी उनका due देना चाहिए कि यार अच्छी विकेट बनाई है. Yeah. ज्यादा नहीं होगा. 250. Yeah. 210 खींच के 110 रन एक सेशन में. I think this is the maximum that they'll go. 150 will be a lot. 210, but I think the wickets they'll lose 3 more wickets. 5 पे होंगे. 210 for 5 with Joe Root still standing there. Got 2 batters I think can do wonders. Here is Joe Root and then Bairstow in his 100th match. You never know. Okay. So Vian is saying 90 runs for 3 or 4 wickets. I partially agree to what Vian is saying. I believe they're going to add just 90, not 100. 100 के ऊपर नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि Joe Root, I feel he's going to play that cautious with that cautious approach. But yes, one wicket, just single wicket in that session. I just feel it's going to be 190, 195 for 3 at the end of the second session. Unless England is so unserious or non-serious about this test match, they are going to throw away all those 3-4 wickets. क्योंकि यार आपने कुछ deliver किया ही नहीं है. I mean, were you but really भाई अगर 3-4 विकेट निकले ना तो फिर 90 भी नहीं बनेंगे. Then it's going to be 70-80 odd. क्योंकि आपके पास 3-4 का मतलब आपके बैट्समैन ही खत्म हो गए सारे. Again, then application के ऊपर सवाल उठ जाएंगे ना उनके. फिर ये मतलब how serious were they about this test series because the way they have played so far. Baseball is it like सवाल यही है कि is it non-serious or like just for fun sake you here आप Ashes में ज्यादा concentrate कर रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता उससे. I don't know. जब तक बेसबॉल आपको WTC फाइनल नहीं लेके जा रहा है, इट्स नॉन. बार आप एक मेथड यूज करके फिर बाद में आपको बड़े स्कोर ऐसे बनाना है, चांस भी खेलना है तो. Chaliye, let's go and enjoy the second session. It's almost time. Well, thank you gentlemen for joining me in this one. We'll connect again and talk about this encounter और Indian team के बारे में और बात करेंगे. Thank you so much. Bye bye. Take care. See you. Thank you. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.